Hello and welcome, guys. This is Bhupendra Pradhan. Today we are going to discuss some of the more questions on oceanography. Oceanography ऊपर आमे और किछि questions discuss करिबा आजर क्लास रे. Just a minute. So before starting the session or going on to the questions part को जीवा पूर्वरु just give me 2 minutes so that I can show you some of the promotional slides. It will just take 2 minutes. So the first slide will be on that is Samarthya course. That is Samarthya batch. It is a batch on fundamental course for ASO Secretariat exam, that is batch 9. Now this is batch 9 for the ASO Secretariat exam, fundamental batch Samarthya. Okay. एथिरे सब टॉप एजुकेटर्स माने पढौचंती जेमति कि जोगेश सर मैथ पढौचंती. ओके. देन लक्ष्मीधर सर ओडिया ग्रामर पढौचंती, अनिल गिरिराज सर ज्योग्राफी पढौचंती, अमीय रंजन सर रीजनिंग पढौचंती, सम्राट मिश्र सर इंडियन इकोनॉमी पढौचंती, अभिषेक त्रिपाठी सर इंग्लिश पढौचंती, पुरुषोत्तम मिश्र सर एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढौचंती, सुभाषिष सर पॉलिटी पढौचंती, ललित मोहन सर साइंस टेक्नोलॉजी पढौचंती, आशुतोष दास सर इंटरनेशनल अफेयर्स पढौचंती. ओके. So you can also enroll for this batch. जो मन को दरकार से मान enroll करि परिबे batch रे. Next one is that is the Samiksha batch. Samiksha is OCS foundation batch. This is OCS or OAS foundation batch. Prelims means 2021 पय जो माने प्रिपरेशन रे लागि छंती तांको पय स्पेशली बैचेस गुडा को 2021 पय बैच 12 टाटा जोटा कि ऑलरेडी 2 नवेम्बर स्टार्ट हो किसी सब्जेक्ट्स सरीबा ऊपर अच्छे किसी सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट होची. सो जो माने को जोटा दरकार दे कैन गो फॉर दिस बैच. दैट इज बसंत जेना सर एशियन हिस्ट्री पढौचंती, सम्राट केसरी सर इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट पढौचंती, आशुतोष दास सर फिजिकल ज्योग्राफी पढौचंती, अमीय रंजन सर सीएसटी पढाइबे, महावीर सर इंडियन पॉलिटी पढाइबे, अनिल गिरिराज सर मेडिकल हिस्ट्री पढाइबे. ओके. देन after all this we will talk about the subscription. जदि ए सब बैचेस रे सब्सक्रिप्शन नेबार अछि, जदि OCS ASO एटसेट्रा अन्य गुडाय जिंस भी चली बीडी फीडी सब हमर OPSC रे आसुची अनअकैडमी रे. ओके. तो जो थी भी आपण माने सब्सक्रिप्शन नेबा को चाहउचंती यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन पर मंथ. एथिरे 1400 रुपीस पडुची. जदि 3 मंथ रो नै जिबा देन इट विल बी 3500, जोटा कि लेस देन 1200 पड़ुची पर मंथ हिसाब रे कहले. 6 मंथ्स को 5600 मंथली चार्जेस एथिरे आउरी कमी जाउची ला 1000 तळे आसी जाउची. देन जदि हमें 1 ईयर पे सब्सक्रिप्शन नेबा. ओके. 1 ईयर पे जदि हमें सब्सक्रिप्शन नेबा इट विल बी ओनली 7000, जोटा कि मंथली 600 रुपी कम पड़ुची. आ सबटू बेस्ट जोटा हमें नउछु जदि 2 ईयर सब्सक्रिप्शन नउछु for 2 year subscription we have to give only 8400. okay, only 8400. एथिरे मंथली ओनली 350 रुपीस ही पड़ुची पर मंथ हिसाब रे जदि लगेबा. ओके. प्लस ए सब जते भी हमर सब्सक्रिप्शन अछि मंथली हो, ट्राई मंथली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो और 2 इयर्स पई हो, ए सब थरे पूरी 10% डिस्काउंट रहइबो. 10% डिस्काउंट केते बेले मिलिबो व्हेन यू विल यूज द एजुकेटर रेफरल कोड. जमती मोर एजुकेटर रेफरल कोडटा हो भूपेंद्र सर. यू कैन यूज दिस कोड भूपेंद्र सर और भूपेंद्र लाइव जोड़ा यूज कले भी हम. भूपेंद्र सर यूज कले हम, भूपेंद्र लाइव यूज कले भी हम. यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी सब्सक्रिप्शन यू मेक. ओके. इतरे सब स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस गुड़ा मिलिबो. सब टॉप एजुकेटर्स माने लेसन्स नै कि आसीबे, वीकली क्विजेस रहइबो, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहइबो एंड मेनी मोर थिंग्स. ओके. सो आफ्टर ऑल दिस प्रमोशनल स्लाइड्स गुड़ा आम देखी सारा पर लेट अस स्टार्ट नाउ. एबे आम स्टार्ट करदबा हमर MCQs गुड़ाक, जोटा कि हमको 10टा MCQ सबुदिन आम डिस्कस करूछु. एटा हमर 3 तारिख रु स्टार्ट है डिसेंबर 3 रु अप टू डिसेंबर 14 जाए. देयर आर 12 सेशंस इन दिस मंथ, जो आम सबुदिन हाफ एन आवर कौन करवा डिस्कस करवा MCQs. एबे ओसेनोग्राफी MCQs गुड़ाक चली आम लिथोस्फीयर MCQs किसी डिस्कस
करियो ओके सो लेट अस स्टार्ट नाउ स्टार्ट कर दवा क्वेश्चन नंबर 1 रू जस्ट ए मिनट जो मैंने भी देखुं ओके से माने जो मैंने भी देखुं से माने चैट बॉक्स रे आंसर दे पारे ठीक अच्छे मु तो डिस्कस करुच्ची बट जो मैंने देखुं दे कैन गिव देयर आंसर्स ओके इन द चैट बॉक्स 10टा एमसीक्यू आम डिस्कस करवा दैट विल टेक 20 to 25 मिनिट्स ओके सो हियर वी गो क्वेश्चन नंबर 1 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 1 रे ओके जस्ट अ मिनट लेट मी एनलार्ज इट ओके क्वेश्चन नंबर 1 को आसीबा which one of the following ocean currents is found in the southern hemisphere जदि आम कहवा southern hemisphere ये जो ocean currents गुड़ाक देछि OSO current west wind drift gulf stream canary current ये जो चारटा current देछि यही चारटा करंट भितर कोटा सदर्न हेमिस्फीयर जाउछि ओके ता पय हम मैप यूज कर दवा ओके तो हमको कौन कौन करंट देथिला करंट गुड़ाक देथिला फास्ट आम देखीदे गल्फ स्ट्रीम और कैनरी करंट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ओके एतिकी आम देखीदे आगो फास्ट है गल्फ स्ट्रीम है जो आम ओशन करंट पढ़ुचु ओशन करंट आम पढ़ुचु जे देयर इज नॉर्थ इक्वाटर बोथ साइड दिस इज द इक्वाटर okay this one is the equator passing through South America Africa and Asia and because of the prevailing winds trade winds बहुत हुआ कारण रू ये जगह रे हमें warm currents पाउछु हला the water the equatorial warm waters are pushed by the trade winds in the form of north equatorial current and south equatorial current जोटा कि 5 डिग्री नॉर्थ रो 5 डिग्री साउथ भीतर देखा जिवो देन सेही करंट गुडा को आगो को पडुची हला इन द नेम ऑफ कैरिबियन दैट इज द Canary current sorry that is the Antilles current okay just a minute that is the Antilles current ना रे आगे को बढ़ुची okay and another current is flowing through the Caribbean Sea that is called the Cayenne current ला north equatorial current आगे को बढ़िला Caribbean islands रो ऊपर गला this is Caribbean islands okay एंड एठू जोटा कैरिबियन सी को जाउची दैट इज द काइन करंट सेही करंटटा कोन होची युकातान स्ट्रेट देकी गल्फ ऑफ मेक्सिको को एंटर करूची फ्लोरिडा स्ट्रेट देकी बाहरुची एंड सेही करंट को हम फ्लोरिडा करंट बोली कहूछु एही सब वाटर सब गोटे जगह मिसी जाउची मिसिला परे दे ब्रिंग आउट व्हाट द मेजर फ्लो ऑफ वाटर बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर करंट्स जहा को आ जाउची स्ट्रीम हला दिस इज नोन एज गल्फ स्ट्रीम ओके आको गल्फ स्ट्रीम बोली कहा जाय दैट फ्लोज on the northeastern side of the USA Canada रो eastern side को coast देके एटा flow करे this is the Gulf Stream it is in the northern hemisphere then हमको आउटे current देथिला another current was given that is the Canary current is it is a upwelling current जोटी कोन हुए cold water गुडा का upwelled हुए near the Canary Islands okay exactly between the coast of that is Iberian Peninsula it Iberian Peninsula अछि तळे अफ्रीका अछि exactly से coast पाखा पाखी एटी कैनरी आइलैंड्स अछि कैनरी आइलैंड्स पाखरे अपवेलिंग हुए अपवेलिंग हला परे कोल्ड वाटर्स गुडा को मूव करे टुवर्ड्स द इक्वेटर दिस इज नोन एज द कैनरी कोल्ड करंट एगो कैनरी कोल्ड करंट बोली कहा जाय बिकॉज ऑफ व्हिच देयर इज लेसर रेनफॉल इन द सहारा रीजन बिकॉज ऑफ द कोल्ड वाटर्स इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही अछि आउट देथिला कोन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हला अनदर वाज गिवन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आउट ओएसओ करंट ओके ओएसओ करंट को जदी हमें देखिबा ओएसओ करंट ए जगह अछि हियर वी फाइंड द ओएसओ करंट इन द बेरिंग सी रे हमें पाउछु कोन द ओएसओ करंट दिस करंट इज कॉल्ड द ओएसओ करंट जोटा को परे परे कैमचटका करंट मध्ये कहा जाय हला कैमचटका क्यूरिल करंट भी को कहा जाय दिस इज द ओएसओ करंट हला इट इज द ऑपोजिट ऑफ द current that is called Kuroshio current और Japan current is a part of the north equatorial current in the Pacific Ocean जोटा कि Philippines region रू flow करछि towards Japan region this is Kuroshio current or the Japan current that is the warm current because the equator आछि आ जोटा pole आड़ आछि that is the cold current it is the OSO current it is also known as Kamchatka current एठी मु Kamchatka कहि दिली लास्ट
सेशन रे कामचटका पेनिनसुला पाखरे फ्लो करथवर कामचटका करंट कोल्ड करंट इट इज अदरवाइज कॉल्ड क्यूरिल करंट बिकॉज इट क्यूरिल आइलैंड्स अछि. Okay, this is a part of the Pacific Ocean and it is a part of the northern hemisphere. Northern hemisphere এটা flow କରୁଛି. बाकी ରହିଲା west wind drift. West wind drifts are actually they are the parts of the what? West wind drift गुड़ाक आमे पाइबा in the southern hemisphere, that is in the southern ocean surrounding the Antarctican landmass. Antarctica को घेरी रहिथिबा ए जो लैंडमास टा अछि ता चारिपटे गोटे करंट फ्लो करूची हला जहा को हमें कोन बोली जानिछु दैट इज नोन एज द सर्कमपोलर करंट. आको सर्कमपोलर कोल्ड करंट बोली कुहा जाय. हला एई सर्कमपोलर कोल्ड करंट हला सम पार्ट्स ऑफ द सर्कमपोलर cold current that blow in the southern parts of the Atlantic Ocean, Indian Ocean and in the Pacific Ocean, they are known as what? They are known as the west wind drift. They are cold current. Why they are called west wind drift? Because they are pushed by the westerlies to the east. Okay, so this is the current that is in the southern hemisphere. Southern hemisphere ame gotiye current paile, that is the west wind drift. Answer will be west wind drift. बाकी सब northern hemisphere अच्छे गोटे गोटे करके मु सब देखैछि. Okay, next question number 2 को आसीबा. Consider the following statements. Most of the ocean trenches are found in the eastern and western parts of the Pacific Ocean. They are seldom found in the middle ocean region. Middle Pacific Ocean में मिले ना है, देखा जाए नहीं. Most of the trenches are curved, like concave side facing the open ocean. like को हमें बुझिबा again through the मैप रे ही बुझिबा. एबे को मु इरेज कर दोछि so that I can draw another things. Okay, so जदि हम पैसिफिक ओशन ऑलरेडी एटा प्रीवियस क्लास रे मु देखैथिली, प्रीवियस सेशन रे मु देखैथिली. ला एठी हमें पाउछु कोन दिस द पेरू चाइल्ड ट्रेंच. ला पेरू चाइल्ड ट्रेंच लॉन्गेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड. ट्रेंच केते बेले तयारी हुए? ट्रेंच सेते बेले तयारी हुए जेतेले ओशनिक प्लेट ला एनी ओशनिक प्लेट slides down the continental plate. continental plate तळकु जेतेले ओशनिक प्लेट गुडा को स्लाइड डाउन करे ए जगह रे हमें पाइबा कोन दैट इज द ट्रेंच. एठी किछि एरिया कोन हो जिवो डिप्रेस्ड हो जिवो ओशन फ्लोर, दैट इज कॉल्ड द ट्रेंच. तो एटा हमें लॉन्गेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड पाउछु, दैट इज नोन एज द पेरू चाइल्ड ट्रेंच और इट इज सिंपली कॉल्ड पेरू ट्रेंच भी आगु कहा जाए. नेक्स्ट ए रीजन रे हमें पाइबा कोन दिस अलास्कन ट्रेंच. अलास्कन ट्रेंच भी पाइबा एठी हला. आगो को जदी हमें जीवा एठी देखो क्लियरली देखा भी जाउची हला डार्क कलर्ड है कि ए रीजन टा दिस इज द एल्यूसियन ट्रेंच बिलो द एल्यूसियन आइलैंड्स. ऊपर को एल्यूसियन आइलैंड्स अछि अलास्का रो जोटा कि एक्सटेंड करूची अप टू कामचटका रीजन जाए. देन कामचटका तळे तळ को अछि कोन क्यूरिल ट्रेंच. दिस वन इज द क्यूरिल ट्रेंच. क्यूरिल आइलैंड्स को लागि कि देन वी हैव द जापान ट्रेंच. ओके, मारियाना ट्रेंच, Philippines Trench, like that. Then we have the trench that is known as the Tonga Karmadec Trench. Indian Ocean रे हमें पाउछु this one. It is known as the Sonda Trench. ताको Sonda Trench बोली कहा जाए. तो जे जेटे भी ट्रेंच देखिबा हला देखो ए ट्रेंच गुडा को दे आर मेनली कर्व्ड इन नेचर एंड एगुडा को कनकेव साइड गुडा को माने भीतर साइड टा जोडा पसी गला भले आइछि सेही गुडा को कोन ओशन आडा को ओपन हेकी अछि मैक्सिमम गुडा हला. तो इट इज मोर हला ठीक भाबरे एटा जदी कहबा इट इज ठीक ठाक अछि चलेबो हला. देयर इज नो प्रॉब्लम कर्व्ड टुवर्ड्स द ओशन साइड. फास्ट प्रा को देखिबा फास्ट कोन अछि most of the ocean trenches are found in the eastern western of the Pacific Ocean. एबे देखो जेते भी हमें ट्रेंच देखिले जेते भी हमें ट्रेंच देखिले ए ट्रेंच गुडा का पैसिफिक ओशन रे मैक्सिमम गुडा का अछि ऑन द वेस्टर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन. व्हाई? बिकॉज द पैसिफिक प्लेट टा कन्वर्ज करूची गुडाए प्लेट सहित देन बी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट हला. एठी देयर इज सम सब्सिडियरी प्लेट लाइक the Nazca Plate. okay, ऊपर को अछि कोकस प्लेट ला. these are the minor plates. एमान का कन्वर्जेंस होतबा जोगु पैसिफिक ओशन चारिपटे आमे ट्रेंचेस गुडा को पाउछ ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट. तो इट इज आल्सो करेक्ट. ठीक अछि. तो आमे एठी कोन बोथ को करेक्ट नै परिबा. 1 2 बोथ आर करेक्ट. ओके, दैट इज व्हाई आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 3 को आसीबा हमें. क्वेश्चन नंबर 3 रे कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. ए भीतर कोटा करेक्ट नुह.
हला कार्माडेक ट्रेंच एबे कहितली टोंगा कार्माडेक ट्रेंच न्यूजीलैंड ऊपर को अछि 2-3 थर 4 थर खंडे कहलेनी एका हला तीनटा सेशन भितरे कार्माडेक ट्रेंच लाइज टू द साउथ ऑफ इंडियन ओशन हला साउथ ऑफ इंडियन ओशन ठीक अछि जस्ट ए मिनट एटा एक्चुअली मिसटाइप हे जे ठीक है नॉट को एबे छाड़ देबा actually there is some typing mistake है जी okay just a minute let me confirm okay so एटी करेक्शन किसी कर दबा ठीक अछि एटी there is some typing mistake here हला नॉट टा ठीक अछि नॉट इज ओके बट एठी टाइपिंग मिस्टेक एठी हे जाइछि जस्ट ए मिनट हला हियर देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक ओके हला दिस शुड बी पैसिफिक ओशन दिस शुड बी पैसिफिक ओशन एटा मो इंडियन ओशन टा टाइप कर दैछि ओके दिस शुड बी पैसिफिक ओशन एठी टाइपिंग मिस्टेक ठीक हे जाइछि ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट कार्माडेक ट्रेंच जोटा अछि कार्माडेक ट्रेंच लाइज साउथ ऑफ द इंडियन ओशन नो इट लाइज ऑन द पैसिफिक ओशन एबे जस्ट देखि दिले टोंगा कार्माडेक ट्रेंच न्यूजीलैंड पाखा पाखी अछि जो साउथ ऑफ द पैसिफिक ओशन एल्यूशियन ट्रेंच इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द बेरिंग सी एल्यूशियन ट्रेंच को जदि हमें देखिबा हियर वी हैव द एल्यूशियन देखो एडा अछि टोंगा कार्माडेक ट्रेंच इज लाइज साउथ ऑफ द पैसिफिक ओशन इक्वेटर तळको अछि दिस इज द इक्वेटर तळको अछि ओके देन दिस वन हला हियर दिस वन दिस इज द एल्यूशियन ट्रेंच ओके it is on the north of the Pacific Ocean ठीक अछि देन आउटे देछि संडा ट्रेंच एग्जैक्टली जोठू इक्वेटर क्रॉस करूछि हला तो एटा साउथ रे अछि नॉर्थ रे अछि जोटा कहले चलियो हला बट एग्जैक्टली साउथ रे अछि हमें कहि परिबनी बिकॉज़ इट इज ऑन बोथ साइड्स हला संडा ट्रेंच ठीक अछि तो संडा ट्रेंच को हमें इक्वेटर साउथ रे अछि कहले भी चलिबो देयर इज नो प्रॉब्लम हला पेरू ट्रेंच हैज बीन formed by subduction of Nazca Plate below the American plate देखो एटी देखो एबे जस्ट कहितली that is the Nazca Plate here is the Nazca Plate or it is known as the East Pacific Plate जेतले Nazca Plate और East Pacific Plate this is the Nazca Plate और East Pacific Plate this is the South American Plate जेतबेले Nazca Plate टा South American Plate तळको सबडक्ट करिछि तो सेठी तयारी हि कोन ट्रेंच that is the Peru Trench that is correct हला तो हमरो सही ए टा ही कोन हो रॉन्ग हो हला ए विल बी रॉन्ग दैट इज इंडियन ओशन जोटा अछि हला मु भाबुतिले एटा मे बी सम प्रॉब्लम अछि बट इट इज करेक्ट ठीक अछि नो प्रॉब्लम ओके द ए विल बी आंसर बिकॉज़ एटा इंडियन ओशन देछि और एटा कोन हो पैसिफिक ओशन हो नॉट ठीक अछि करेक्ट ओके नंबर 4 को हमें आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग Seamounts are isolated volcanic hills on the sea floor ला Seamounts गुडा कहउचंदी sea floor माने समुद्र तले जो एरिया टा दैट इज द sea floor ओके आउ सेही sea floor ऊपर देयर आर सम आइसोलेटेड हिल्स कोठी केमती किछि किछि हमें हिल्स पाइबा जो हिल्स मानकर हाइट टा बहुत कम ओके दैट आर सबमर्ज्ड हिल्स जहा को Seamount बोली कहा जाय दैट इज करेक्ट Guyots are flat topped hills एबे ए जो Seamount गुडा कर ऊपर पोर्शन गुडा जदी फ्लैट थिबो माने प्लेट्यू लाइक this plateau like structure having flat top are called Guyots it is also correct deep sea plains cover the maximum area of the ocean floor about 40% area total ocean floor पृथ्वी रो जति के ocean floor अछि ताकू जदी हमें 100 बोली धरिबा तार 40 भाग केवल किए deep sea plains उडा ही कवर करे तो it is correct wrong कोडा अछि डी टा wrong अछि कोन कहै छी largest number of islands is found on the Atlantic Ocean जदि तुम मैप देखिबो मैप रे क्लियरली जणा पड़ि जिवो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स हला लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स आर एक्जेक्टली ऑन द पैसिफिक ओशन लुक एट दिस हला फिलीपाइंस हला ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर्किपेलागो इंडोनेशिया आर्किपेलागो ओके देन देयर आर सम स्ट्रक्चर्स दैट आर न्यूजीलैंड हला ताकू हमें छाडी के कोन मेलानेशिया माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया एटसेट्रा करिकि हमें गुडाए आइलैंड सेठी पाइबा हला एग्जांपल होची जेमती हमरो इक्वेटर ऊपर अछि कोन देयर आर सम आइलैंड कोरल आइलैंड्स दैट आर नोन एज किरिबाती okay Fiji etc a lot of islands are there hela and on the western coast also Japan hela Formosa island that is Taiwan
Ryukyu Islands, that is under Japan, then Kuril Islands under Russia, Aleutian Islands under Alaska. There are so many islands located on the Pacific Ocean, and there is an island that is known as what? This one, just above the equator. This is the Hawaiian Islands. Okay, there are a lot of islands in the Pacific Ocean. Pacific Ocean has the largest number of islands. Okay, that is why D will be incorrect. D टा भूल जाओ, ठीक है. नेक्स्ट नंबर 5 आम ये जहाँ भी डिस्कस करूँ हम कौन आमर जहाँ आगु आम पढ़ीचु ओशन विषय एटसेट्रा विषय जस्ट आम गोटे कौन रिक्याप हो गोटे कंप्लीट रिविजन हो थ्रू दिस क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस गुड़ाक देवार यहाँ भी कारण अच्छे कौन देयर विल बी सम रिविजन क्लियर रिविजन हो. ओके, so let us move on now. Number 5 को आसीबा. Northern and the southern parts of the mid-Atlantic ridge are respectively known as we know the Atlantic Ocean. देखो Atlantic Ocean is famous for ridge. What is that ridge? That is the mid-Atlantic ridge. Mid-Atlantic ridge पर famous हो चुकी है the Atlantic Ocean. हला, it is famous. So these are actually mid-oceanic ridge. लाइट सब mid-oceanic ridge गुड़ा. अविनाश साहू 5 रो A exactly पूरा पूरा ठीक अविनाश. हला आंसर will be A. ओके, आंसर टा तो A ही हबो. ताले हमें देखि देबा अन्य ट्रेंच जहाँ देछि वेल्बिस ट्रेंच देछि ला विबिली थॉमसन रिज देछि सॉरी ट्रेंच कोची रिज वेल्बिस रिज देछि देन विबिली थॉमसन रिज देछि. ओके, तो देयर आर सर्टेन रिजेस गिवन गुडाय रिजेस अछि. तो एथिरे आमे सबले मन रखिबा व्हेन देयर इज अवे मूवमेंट जेतले कोन हिची अवे मूवमेंट हिची कहार कहार कहलो अवे मूवमेंट हिची ये जो प्लेट्स मानकर को प्लेट्स मानकर अवे मूवमेंट हिची नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यूरेशियन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट अफ्रिकन प्लेट जेतले एमानकर अवे मूवमेंट हिची माने जेतले परस्पर ठारो दूरेई छंती हला परस्पर ठारो दूरेइबारे कोन होय दुटा ओशनिक प्लेट जेतले परस्पर ठारो दूराए हला जितले परस्पर ठारो दूराए तो सेठी कोन होय देयर विल फॉर्मेशन ऑफ रिजेस हला ई जगह रे रिजेस गुडा का फॉर्मेशन हुए. ओके, रिजेस गुडा कोन दे आर स्मॉल हिली टाइप स्ट्रक्चर्स जोटा कि स्प्रेड करके रहइबो थ्रू आउट द प्लेट मार्जिन्स पूरा प्लेट मार्जिन्स रे विराट बड़ा एरिया. ओके, बिलो द ओशन फ्लोर ऑफ द अटलांटिक ओशन हियर यू फाइंड द ridge that is known as the mid Atlantic ridge. It has two parts. One part is known as the Dolphin Ridge, upper part is Dolphin Ridge, lower part is called the Challenger Ridge. Exactly Africa को लगी 8. Here we have another ridge like this one. This one is known as the Welvis Ridge. Okay, this is the Welvis Ridge. Okay, and Welvis Ridge is exactly opposite रे on the Brazilian side. Brazil side coast pakapaki. This is the Rio Grande Ridge. Okay, this one is the Rio Grande Ridge and this one is the Welvis Ridge. Outer ridge जोटा देथिला थॉमसन वेल्बिस रिज सेटा हम ऊपर पाइबा यूनाइटेड किंगडम ऊपर ऊपर हला रीजन एई पाखापाखी हम एठी पाइबा सम रिज. ओके, वेल्बिस थॉमसन रिज these are the ridges located in the Atlantic Ocean. All these ridges are located in the Atlantic Ocean. The mid Atlantic ridge has two parts mainly. The upper part is Dolphin, the lower part is the Challenger Ridge. Africa side रे हम मन रखिबा here we have another ridge that is the Welvis Ridge. On the opposite there is some ridge Brazilian coast को लगी that is called the Rio Grande Ridge and here we have the Welvis Thompson Ridge. Welvis Thompson Ridge. ओके, रिजेस गुड़ा किसी मन रखियो बेले बेले एग्जाम रे आसे जेमति हम इंडियन ओशन रे डिस्कस करथिले 90 ईस्ट रिज ब्रोकन रिज साकोट्रा चैगोस सॉरी हमर जो लाकाडिप चैगोस रिज. ओके, देन हियर वी हैव द कार्लसबर्ग रिज देन सिचिलिस रिज नॉर्थ दैट इज द साउथ वेस्ट रिज. ओके, एटसेट्रा गुड़ा रिजेस अछि. नेक्स्ट वन, सो नंबर 5 रो हम आंसर दबा काकू A. A will be the answer. Next, 6 question. Consider the following statements. Lake Van has the highest salinity in the world. Lake Van रो salinity सबठारु अधिक. Gulf of Bothnia records some of the lowest salinity in the world. हला तो सब बेले हम मन रखिबा क्लियरली हम आगरो डिस्कस भी करिछु. Lake Van is located in Turkey.
Lake Van is located in Turkey and it has the highest salinity in the world. Here are salinity at 330. Okay, if the salinity is 330, out of the 1000 parts of the water, 330 parts are what? Salt. So 330, it has the highest salinity in the world. It is correct. Next one, Gulf of Bothnia records some of the lowest salinity. एबे गोटे जिनस मन रखिबा जे आम जदि ओशनिक स्ट्रक्चर्स भितर देखिबा, ओशनिक स्ट्रक्चर्स भितर बाल्टिक सी हैज द लोएस्ट सैलिनिटी. व्हिच सी? बाल्टिक सी. बाल्टिक सी आउट ऑफ द सी जदि आम समुद्र मानक सहित तुलना करिबा, बाल्टिक सी हैज द लोएस्ट सैलिनिटी. बाल्टिक सी हैज द लोएस्ट सैलिनिटी, जहार सैलिनिटी टा हला 2 ରୁ 10 भितर भेरी करे. इट वेराइज फ्रॉम 2 to 10. आउट ऑफ द 1000 पार्ट्स 2 parts to 10 parts भितर एटा वेराइज करे. ओके. 6 रो ए अविनाश साहू. ओके, तो देख मु आउ टिके एक्सप्लेन करूची. सेटा मु कोन कहली बाल्टिक सी. एबे हमें बाल्टिक सी को पळेबा. हला लेट अस गो टू बाल्टिक सी. बाल्टिक सी को जगह रे अछि. हला कम हियर इज द बाल्टिक सी. हला कैन यू सी दिस? हला ए स्ट्रक्चर टा, this is known as what? This is known as the peninsula, that is called Scandinavian Peninsula. This structure is called the Scandinavian Peninsula, consisting of Scandinavian countries that are known as what? Sweden, Norway and Finland, and the other side is Russia. ये जो whole structure ये structure गोटे side होची White Sea, that is a part of the Arctic Ocean, and this part is known as the Baltic Sea. It has the lowest salinity out of the seas. जेते सी अछि तांका भितर lowest salinity होछि यार बाल्टिक सी. एई बाल्टिक सी रे हमें 2टा गल्फ पाउछ. We have 2 gulfs. This Baltic Sea has 2 gulfs. One is this one, ए जो गल्फ टा, it is called Gulf of Bothnia. Gulf of Bothnia. And second one is this gulf. This is the known as the Gulf of Gulf of Finland. Gulf of Finland. So because Baltic Sea has the lowest salinity, तो आम जदि यही पॉइंट को ठीक बोली कहबा, इट इज हला किछि अत्युक्ति हबो नाही. बिकॉज बाल्टिक सी हैज द लोएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, तो ता भीतर जाउछबा गल्फ ऑफ बोथनिया टा. हला इट रिकॉर्ड सम ऑफ द लोएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड. इट इज आल्सो करेक्ट. हला बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नंबर 7 को आसीबा. क्वेश्चन नंबर 7 को आसीबा. थैंक यू अविनाश. हला कंटिन्यूअसली आंसर दउचंती. वेरी गुड. आंसर देले कोन हबो गोटे एक्टिव लागिवो समस्त. ओके, नंबर 7, which is the largest archipelago of the world? Caribbean islands are located in the Atlantic Ocean. Okay, Andaman Nicobar in the Indian Ocean, Japan in the Pacific Ocean. Japan ta 4टा group of islands को नेकी theory. Okay, and Indonesia is the largest archipelago of the world that has more than 10,000 islands. It is made up of more than 10,000 islands. सुमात्रा, जाभा, ईस्ट टाइमोर आइलैंड्स, बोर्नियो एटसेट्रा को लेकी ये पूरा कंप्लीट 10,000 भी अधिक आइलैंड्स. सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पपुआ न्यू गिनी आर आल्सो अंडर इंडोनेशिया. ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो ऑफ द वर्ल्ड. नंबर 8, क्यूबा शेयर्स द लोकेशन एट द कन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच ऑफ द 3 वाटर बॉडीज? वर्ल्ड मैप रे जदि आमे देखिबा, क्यूबा जो लोकेशन टा शेयर करूची, एई भितर को वाटर बॉडी सेठी देखा जिवे. हला एई भितर को वाटर बॉडीज हमको देखा जिवे. जस्ट मैप को आसीबा. लेट मी इरेज. 7 रो सी आंसर देला. गुड अविनाश. देखो भूल हो ठीक हो, जहाँ तुम भावुच आंसर दियो. डिस्कशन तो आम करवा ना, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक अच्छे. सो आम कहते अबाउट क्यूबा. हियर इज क्यूबा. क्यूबा एटी अच्छे. एंड क्यूबा चारिपटे जदि आम देखा, हियर इज यूएसए, मेक्सिको रिजन. ये जो रिजन टा अच्छे. देन वी हैव द कैरिबियन आइलैंड्स. ओके, लाइक दिस. ओके, देन से कही को वाटर बॉडी सहित क्यूबाटा तार कोस्ट लाइन शेयर करुच्ची. कोस्ट लाइन क्या सहित शेयर करुच्ची. 8 डी. गुड.
क्यूबा को जदि आम देखा क्यूबा सहित आमर आटलांटिक ओशन अच्छी क्यूबा आटलांटिक ओशन सहित लगिकी अच्छी कार्बियन सी सहित लगिकी अच्छी on one side there is Atlantic Ocean, on other side there is Caribbean Sea, and on the northwestern side there is Gulf of Mexico, largest Gulf of the world. Gulf of Mexico ro waters भी लगुची, Atlantic Ocean ro waters भी ता सहित लगुची coast सहित, आउ Caribbean Sea सहित भी लगुची. Okay, so our answer should be all the three. जो तीन टा जगह देथिबो सेटा हमर आंसर हबो. कोन आंसर हबो? Atlantic Ocean हबो हला. Atlantic Ocean will be there, Gulf of Mexico will be there, and Caribbean Sea will be there. Okay, Gulf of California सेटा अलग रही जाउची. Okay, Gulf of California सेटा Pacific Ocean part रे रही जाउची. Gulf of Alaska भी सेटा अलग रही जाउची ऊपर हला on the Pacific, northern Pacific Ocean. Caspian Sea is what? It is an inland lake in the Central Asia. Okay, last two questions are there. Mention the strait which connects the Indian Ocean and South China Sea. जदि आम स्ट्रेट गुड़ाक देखा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट, जदि आम कनेक्ट पचारि आम कनेक्ट कथा ही कहबा. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज नोन एज द गेटवे टू द मेडिटेरेनियन. इट इज नोन एज द गेटवे टू द मेडिटेरेनियन. दैट मीन्स इट कनेक्ट्स Atlantic Ocean टू द मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन सी सहित कनेक्ट करुछि. सेपरेट क्या को करे? इट सेपरेट द आइबेरियन पेनिनसुला फ्रॉम अफ्रीका. It separates the Iberian Peninsula from Africa. तले Iberian Peninsula अच्छी like this, consisting of Spain and Morocco, Spain and Portugal. और तले अच्छी कौन? There is Africa. Here we have Africa. This side is Mediterranean Sea. This side is Atlantic Ocean. This is the Strait of Gibraltar. ऊपर Iberian Peninsula अच्छी. तले Africa अच्छी. ऊपर Europe अच्छी. तले Africa अच्छी. Intercontinental Strait. Okay. Then we have the Bab-el-Mandeb. Bab-el-Mandeb Strait. Bab-el-Mandeb Strait टा होची it separates, खाली भी हमें डिस्कस करथिले कौन कौन एरिट्रिया एंड येमेन. it separates एरिट्रिया एंड येमेन. गोटे साइड रे यार हॉर्न ऑफ अफ्रीका अच्छी, गोटे साइड रे अरबियन पेनिनसुला अच्छी. कंट्री वाइज जदि कहबा गोटे साइड रे येमेन अच्छी, गोटे साइड रे एरिट्रिया अच्छी, सॉरी जिबोती अच्छी, एरिट्रिया कह दूची, सॉरी फॉर दैट. जिबोती अच्छी, जिबोती और येमेन को सेपरेट करे. ओके, और आम कहीपर एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करे कंटिनेंट, इंटरकंटिनेंटल स्ट्रेट. देन पल्क स्ट्रेट तो इजिली आम जानी इंडिया श्रीलंका सेपरेट करुच्ची. तो आमर आंसर कौन है? आंसरटा है स्ट्रेट ऑफ मलाका. इट्स कनेक्ट्स इंडियन ओशन विथ द पैसिफिक ओशन. ये पूरा पूरी भाव में इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन सहित कनेक्ट करुच्ची. हियर इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका. एक्जेक्टली इन बिटवीन दिस ए जगह. ऊपर रहा मलेशिया, तले रहा सुमात्रा आइलैंड दैट इज इंडोनेशिया. मलेशिया इंडोनेशिया को सेपरेट करुच्ची, इंडियन ओशन को जोड़ुची साउथ चाइना सी सहित. ओके, एक्जेक्टली अविनाश. देन here is the last question for today. Okay, आज लास्ट क्वेश्चन आम डिस्कस करवा. व्हाट इज दैट? Pick out the strait which is situated between Iran and Arabia. ईरान और अरबिया मध्य जो स्ट्रेटा अच्छी ताकू आम चूज करवा. गोटे देखिए डेनमार्क स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट ऑलरेडी आम डिस्कस हो जाए, तो हेनी. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और बाबल-मंदेब भी डिस्कस हो जाए. तो आम डिस्कस करवा डेनमार्क और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ये भितर गोटे हम. ओके, सो लेट अस गो टू द मैप. फर्स्ट देखी ना डेनमार्क. डेनमार्क स्ट्रेट इज दिस वन. This is the Denmark Strait. Denmark Strait separates the largest island of the world, that is the Greenland island. Greenland को separate करुच्ची कहा टू Iceland. It separates Greenland and Iceland, joins Atlantic Ocean and Arctic Sea. both को जोड़ुची. एक्जेक्टली अविनाश, वेरी गुड. ओके, सो एटा तो हबनी हमर आंसर. हमर आंसर कोटा हबो? हियर यूटिलाइज द आंसर. याकू जदी हम ए रीजन टा को देखिबा, गल्फ, दिस इज ऑन वन साइड we have the Arabian Peninsula part गुड़ाक रही. On the other side we have this one. This is the, okay, here this structure, a structure टा मुझे देखौची. Okay, on one side there is Oman. Here there is Oman. On one side there is the water of the Persian Gulf. It is known as the Persian Gulf. Here ei पाखरे हमें पाइबा Gulf of Oman. This is the Gulf of Oman. On the other side we have Iran and Oman.
both are Asian countries, Iran and Oman. Okay. ये जो स्ट्रेट था, द स्ट्रेट नैरो स्ट्रेट दैट्स जॉइंस द पर्सियन गल्फ विथ द गल्फ ऑफ ओमान, और आम कहीपर अरेबियन सी कहीपर, दिस इज अरेबियन सी. ओके. वाटर को जोड़ुची, सेपरेट करुची क्या क्या को, ईरान को सेपरेट कर ओमान. ओके. दिस वन इज नोन एज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. इट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. सो आमर आंसर को जदि आम जा, the answer will be what? The answer will be C. Exactly, Avinash. Thank you for your answers. Okay. So I hope समस्त को किसी ना किसी शिखा को मिली थी. मुझे ही क्लास गुड़ा नहीं आसूँ सबुदिन 4 PM एवरीडे. एवरीडे दिस सेशंस विल बी एवरीडे 4 PM. 4टा जाए रही अप टू 14th December. 14th December जाए यही सेशंस गुड़ा कंटिन्यू चलो. ओके. एबे आम ओशेनोग्राफी डिस्कस करूँ. आ गोटे क्लास ओशेनोग्राफी डिस्कस करार अच्छी. देन नेक्स्ट आम शिफ्ट करवा लिथोस्फीयर को. ओके. सो थैंक यू एवरीबॉडी जो मैंने भी जॉइन कले देखिले. ओके. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.